शाय कह लें या जो भी आप कह लो, बट आई एम नॉट अ शाय पर्सन इन दैट केस, बट आई डोंट हैव टाइम कि मैं वो एक्सप्लेनेशंस देता फिरूं और करता रहूं. सो हमने फिर अब लास्ट वीक तो हमने ये सोच के हमने एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया है, who also happens to be the chairman of vice chairman of LDA, Sheikh Imran, and a businessman, of course, from He's your also a community. member. He's your member and your guy. So Imran is the official spokesperson for Ruda now, and he did a press conference last week. और उसमें ही शायद अभी भी लोगों को ये होता है कि they want to hear from the horse's mouth, the person who is on the seat and who is really doing it. So let me just, shortly introduce myself also a little to you. I am also a member of the Islamabad Chamber of Commerce. So I am one of you in the first place. इस्लामाबाद चेंबर कितना बड़ा है मैंने कहा मुझे नहीं पता, मगर लास्ट इलेक्शन हमारे बड़े सियासी इलेक्शन हुए हैं और बड़े हीटेड इलेक्शन हुए. और दो स्मॉल बट इस्लामाबाद चेंबर इज़ डूइंग नॉट बैड. लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन द चेंबर विच हैव हैपेंड देयर. सर्विसेज के लिहाज से, स्पेशली द मेंबर्स के हवाले से, लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ हैव बीन एडेड. It's like a businessman club in a way. The chamber is a businessman club. So one, that I'm very happy that I'm here and meeting all of you and explaining to you on the project a little bit. देखिए जी, ये I don't call it a project in the first place because it is not a project. It is creation of basically recharge the river. Any body as such has got the heart in it. Whether it's a human being, whether it's in your organization और कोई भी आपका है, उसका एक हार्ट ज़रूर होता है. इस शहर का भी एक हार्ट था. I studied in this city, very much in this city, way back in 67, 69. So I know what Lahore was of 69. Maybe a lot of you don't know because a lot of youngsters sitting here, so you don't know what Lahore was, but I know what Lahore was in 69. And I still remember what Ravi was. The Ravi rowing club was there, there was water over there. You used to go in the Baradari into the boat across the river. And over the period of time, I think the residents of Lahore have not faced any better life in the real form, the way it should have been. The metropolis in the world have grown and gone better. We have not gone better. We have gone for worse. That's what we have done. और उसमें आप देख लो कि आपका जो हार्ट था वो तो आपका दरिया था, वो आपका हार्ट था, वो उसी के किनारे ही वो शहर था. ये तो बात की बात है कि वो एक्सपैंड करता गया, हम बॉर्डर पे पहुंच गए, पता नहीं कहाँ कहाँ हम निकल गए और हमने हार्ट को छोड़ दिया. वाटर कमीशन की जो भी थी, वाटर कमीशन में राइट्स आप पे चले गए, आपने उस पर डैमिंग नहीं की टाइम के ऊपर, सो वो आपके हाथ से निकल गया. और रिज़ल्ट ये हुआ कि ये एक टूल आपने दे दिया किसी और के हाथ में कि भाई जब आपका दिल करे हमें ख़राब करना हो तो आप पानी छोड़ दो पीछे से और हमारे लिए सैलाब छोड़ दो और हमारे लोग उसमें मर जाएं और बाकी साल इसके अंदर पानी जो है वो बंद कर दो और हमारे लिए ये एक डर्ट का ड्रेन का हमें वो जगह बना दो. एंड दैट्स व्हाट इट इज़. इट डजंट एग्जिस्ट. अब लो फ्लो सीज़न है. आज के दिन में अगर कोई जाए वहाँ पे तो देखो, सवाए इसके कि गंद और कचरे के और जो पूरे लाहौर का गंद है, देयर आर 14 ड्रेन्स बाय द वे which discharge directly into the Ravi. And all those drains have got like all your sewerage. उस ड्रेन में आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है. I don't blame the industry for that because then you need to provide a system to the industry that where do they put the waste. There has to be a system to it. अब उसने फैक्ट्री तो लगा ली है, अब वेस्ट कहाँ फेंकेगा? तो कुछ सिस्टम होगा तो उसको बताएंगे तो फेंकेगा ना. सो बेसिकली वो जो एक हार्ट है, उस हार्ट को आप रीअलाइव करने लगे हो, उसकी आप सर्जरी करने लगे हो. ठीक है. सो द सिटी इटसेल्फ दुनिया ने किया है, हमको नई चीज़ नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत तूफ़ान चीज़ कर रहे हो आपको जो कभी हुई नहीं ज़िंदगी में कहीं. लोगों ने शायद सोचा था और 2014-15 में इसके ऊपर बड़ा काम हुआ.
बड़ी feasibility बनी, lot of money was spent on the feasibility, world experts were hired, Singaporean थे, Britishers थे, Americans थे, water experts थे, town planners थे, they made a feasibility report on it. और उस पर हुकूमत का ही पैसा obviously खर्च हुआ था. और वो पैसा अब I don't want to go into the reasons and the political side of it. I'm not a politician and I don't want to make any political statement. ठीक है? But obviously there could have been compulsions. Every government, everybody has got their own priority areas. How do they want to do it? But this obviously needed a lot of will to move forward on it. And then it was shelved because the last component, only the last component, which was detail engineering, which was left out. Rest all the work had been done till that time. So water was of course one major component. There were a lot of people who were saying at that time कि जी पानी नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, किस तरह होगा. मगर स्टडीज़ हो चुकी थी और स्टडीज़ का जवाब भी दिया जा चुका था कि उसमें पानी आपने कहाँ से ऐड करना है, BRB लिंक कनाल को आपने कैसे ऑगमेंट करना है, आपने उसके बाद आगे ला के उसकी चैनलाइजेशन कैसे करनी है, आपने लेक के अंदर कितना पानी स्टोर करना है, कितनी लेंथ पे स्टोर करना है और उससे रिचार्ज करना है लाहौर के पानी को, और फिर उसके साइडों पे प्रोमेनेड बनाना है और बैराजेस बनाने हैं ताकि आपका सैलाब आए तो वो सैलाब रुक सके, ताकि लोग जो किनारों पे बैठे हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर तो आप उनको भले इलीगल कहो मगर वो फ्लड प्लेन के अंदर बैठे हुए, जब सैलाब आता है तो उड़ जाते. शादरा के ब्रिज के पास यू विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट कि शादरा के ब्रिज से लिटिल अपस्ट्रीम ये वो एरिया था कि जो छोड़ा गया था, ब्रीचिंग सेक्शन था ये, कि अगर सैलाब आएगा तो यहाँ से ब्रीच किया जाएगा बंद को और पानी डाइवर्ट किया जाएगा ताकि लाहौर बच जाए पानी से, सैलाब से बच जाए. अदरवाइज़ पुराना शहर सारे का सारा गया पानी से. तो वो ब्रीचिंग सेक्शन भी ख़त्म हो गया. नाउ यू कांट ब्रीच इट इवन. अगर सैलाब आता है आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते हो बिकॉज आपकी आबादी बन गई है, वहाँ पे ढेरों आबादी बन गई है. अब वेदर देर लीगल और इलीगल दैट्स अ डिफरेंट इशू, बिकॉज फॉर श्योर जो बैंक पे दरिया के अंदर बैठा हुआ है वो इलीगल तो है मगर बैठा हुआ है 30 साल से बैठा हुआ है. इसी तरह महमूद बूटी की तरफ चले जाए आप, तो बुनियादी चीज़ ये है कि दरिया जो है वाटर को रिचार्ज करना है, फ्लड का अरेंजमेंट करना है, और अगर उसको करने से एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है. एंड आई स्टिल रिमेंबर एंड आई कोट यू वन थिंग विच वाज वेरी वेरी रेलेवेंट. दुबई में बिल्डिंगें बनती जा रही हैं. दुबई का अब सिंस वी सिटिंग इन द चेंबर ऑफ कॉमर्स, हम बिजनेसमैन बैठे हैं, तो बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं. फाइनेंशियल क्रंच आ गया है. दिस इज़ दी लास्ट क्रंच विच UAE हैड, और उसमें one gentleman, one guy at one day, then I think ये ज़रा ऑन हो जाए मेरे ख्याल. कॉफी लेंगे कि टी फाइन? यार मुझे कॉफ़ी दिला, ब्लैक और ब्लैक विद मिल्क. अली जी बेटा, इज इट ऑन? ब्लैक कॉफी दूध और चीनी. जी, एम आई ऑडिबल? ठीक है जी. तो एक साहब जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने जाके शेख मोहम्मद राशिद से पूछा कि आपका तो बड़ा सुपर फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है, एंड आई सी स्टिल बिल्डिंग्स बीइंग मेड, and I still see so many apartment buildings which are lying vacant and office spaces which are lying vacant. Why we are doing all this? And how, I mean, and you're constantly approving every building every day that some plaza will come up, some hotel will come up. What is it happening? So Sheikh Rashid gave a very, I think, a sensible answer, which really hit me, and I still, I mean, that makes sense. It was like, listen, I'm creating an opportunity for an opportunity to happen, regardless. So what everybody would do here, that you're creating an opportunity for an opportunity to happen. In this particular project case, this is an opportunity lost. This is a survival basically for the main city where you are living. I don't live in this city.
I come from a much, much cleaner city, unfortunately. And uh, still we have a much greater greener cover than what Lahore. I remember in my university days of Lahore, ठीक है जी, would you be amazing to hear that in the last 10 years, ये सुपार्को की स्टडी है लेटेस्ट जो उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी से की है, लाहौर का ग्रीन कवर 167% कम हुआ है. 167%. Now these are hardcore imageries जो सुपार्को ने की हैं और उन्होंने बाकायदा पिछले सालों को कवर करके बनाया है. अर्बनाइजेशन 212% इंक्रीज हुई है. 212%. Water has gone down by 600 feet in Lahore. Your bedrock of Lahore is 1300 feet level. You're only 200 feet left. 600 feet के ऊपर, if you dig a bore, you will smell sewer because your sewer has collected with your drains and it has gone down. How do you address this? अगर आपने इसको 3 साल और ना किया, I can bet with you, whether I'm here or not, I can bet with you, those living in Lahore are going to have a severe crisis of water. This will not be the place that you will be living. You'll start selling your houses and you'll move out somewhere else. Believe me, that's going to happen. And it's not just defense or something, it is a reality, and let's face a reality. ये वो है. हल क्या था? ये project जो 2015 में conceive हुआ था was not a bad project, to be honest with you. This was a great thing if it had happened, but it didn't happen. Now it is happening. Anytime when you go in for such a aggressive, such a new talk of a new city, और लोगों को अब, I'm sure lot of us here sitting here have traveled abroad. ठीक है जी? At least most of you have gone abroad. How many people have gone out of Pakistan in terms of percentage or travel? They don't know the word. दुनिया में क्या हो गया है आपको ज़्यादा इल्म है. जुमेरा में क्या है? Those of you who have seen east part of London maybe 10 years or 15 years ago, and they see it now as of yesterday, that is not the eastern London anymore now. Canary Wharf is the most prized location of London at this point in time. I was there last year, and I stayed in Canary Wharf. Nobody would have thought of going to East End in a Bengali area, in a warehouse area, and live there. But today people live there. वो क्या है, रिवर के साइड के ऊपर बना हुआ है. सिंगापुर के दरिया को देख लें क्या हालत थी 20 साल पहले और आज क्या है. की को देख लें कैसे डेवलप कर गया है वो. मेलबर्न को देख लें, दुनिया को देख लें. पाकिस्तान ने क्या जुर्म किया हुआ है कि why can't you have things like that? Why can't you have modern buildings and apartments and proper housing and proper systems and green energy and roads and networks, and why can't you have it? I mean, we are experts in spoiling the bloody thing, but we are not experts in redoing the thing and be part of something which is good, which is going to happen. So project का जो primary जो एक role है, जो component है, number one component, the core component, that is the river. The river channel is going to store water to 46 kilometers. वो चार्ज करेगा लाहौर के रिजर्व्स को जो डिप्लीट हो रहे हैं. That pondage of 46 kilometers is going to be about 15-meter high walls over piles. Not a straight channel. It will go as a snake as the river moves. It's going to go exactly like this on the same bank where it is right now. और उसके ऊपर फिर 3 barrages हैं. The first barrage is coming, somewhere closer to the existing railway bridge, short of that, upstream. The second barrage is then further down, the third is further down. So वो पानी जो हम एक मराला लिंक कनाल से ऐड कर रहे हैं रिवर में through the BRB and bringing it forward from the siphon. Siphon की भी उसमें रीमॉडलिंग है थोड़ी सी, क्योंकि siphon के ऊपर एक क्लीन वाटर प्लांट लग रहा है. वो ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो पानी साफ वाली वो लगाने लगी है. They are going to put a reservoir of clean water there near the siphon. And then you come to the first barrage. Then you go to the second barrage and the third one near Balloki. And this water then gets back into your system. और इसके साथ जो दूसरा कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हो वो ऐड कर रहे हो आप 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने लगे.
Now, they were under discussion for the last 3-4 years, but no action was taken on them. वो पड़े रहे 3-4 साल से, उसकी यही नहीं डिसाइड हो पाया कि जी टेक्नोलॉजी यूज़ क्या करनी है और करना क्या इन प्लांट्स को हमने। वो 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1000 क्यूसेक क्लीन वाटर करके वेस्ट वाटर, ये जितना आपका लाहौर का गंद 14 ड्रेन्स का जो रावी में गिर रहा है, इसको वो ट्रीट करेंगे 7 वेस्ट वाटर, जो बाबू साबू का सबसे बड़ा है, और उसके अलावा नीचे तक हैं कुछ देर, बट 7 ऑफ देम। लकीली उनकी इंजीनियरिंग हो गई हुई है, वो जब फिजिबिलिटी बन रही थी तो उसमें उनकी इंजीनियरिंग कहीं हो गई। सो टेकिंग फ्रॉम दैट इंजीनियरिंग एंड री मॉडिफाइंग एंड एड ऑन्स करके उसको, तो वो फाइनलाइजेशन में उनकी डिज़ाइंस आ गए। सो वो 7 तो वेस्ट वाटर लगेंगे। दैट वाटर अगेन विल कम इन द चैनल फॉर्म एंड एड ऑन टू द रिवर विच इज़ गोइंग बिलो। जो बाकी पानी साफ आ रहा है दरिया के अंदर, जो आप लेक बना दोगे, उसके ऊपर फिर आरओ प्लांट्स हैं। 240 billion liter of water per day will be given to Lahore, this Lahore, which will be dry after 3 years in any case, ठीक है। लाहौर में ऐड होएगा पानी, और जो वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होएगी वहाँ पे जोन्स में, क्योंकि जब आप रिवर लाइन डेवलप करोगे तो प्रोमिनेंट बनेगा। और जो उसकी आपने अगर मास्टर प्लान देखा हो या कुछ वीडियो देखी हो, पीपल डोंट बिलीव कि जी ये पाकिस्तान में ये बिल्डिंगें बनेंगी, ये चीज़ होगी। तो मेरा ख्याल है अगर ज़िंदगी आपकी भी रही और हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना के चले गए तो शायद वैसी चीज़ बन जाए। और कोई ऐसी आई थिंक इट्स नॉट समथिंग कि पाकिस्तानीज़ कैन नॉट अफोर्ड है, पाकिस्तानीज़ कांट हैव अ बिल्डिंग विच इज़ देयर इन लंदन और दुबई, वाई कांट वी हैव इट। तो वो वैसे ही बन सकती है और बनेगी। The idea is to cap on the master plan and the development in such a way that you are in the driving seat yourself and you ensure that what you have in your vision and what is there in that master plan and the 3Ds that you see are in true form implemented. That can happen then. सर 1 सेकंड ब्रेक ले लें। आप इसको भी दोगे और वहाँ जो डेवलपमेंट करोगे वहाँ पे भी उनको भी दोगे। इसके अलावा जब आप लेक बना देंगे 46 किलोमीटर की, तो उसमें से ऑब्वियसली देयर इज़ एवेपोरेशन होनी है उस पानी की, बिकॉज इट्स अ लेक एट अ सर्टन लेवल विच यू गोइंग टू मेंटेन अराउंड द बैराज। नाउ दैट एवेपोरेशन ऑफ वाटर, another 400 billion liters of water evaporation will go into the air. That's your answer to smog, sir. Lahore is a dead city. 1 week ago, you couldn't breathe in this city. You cannot stop the farmer in your vicinity on the border across or within your own districts. You can't go and tell them कि जी ये आप आगे मत लगाओ. He doesn't want to waste money, on a season change हुआ, crop change हुई, उसके स्टब रह गए, उन स्टब्स को वो क्या करेगा? मैकेनिकली या तो निकालेगा, मशीनें लगाएगा. He can't afford it, so the guy is going to burn it. Whatever जो लेक्चर आप देते रहे उसने वो बर्न नहीं करना है. वो धुआं उठेगा और वो जनाब जाके स्मॉग बनेगी, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर तो वैसे ही कुछ चौक रहा है, टेम्परेचर लो हुआ है आपका. दैट वाटर इन द रावी एवेपोरेशन विल एड्रेस योर स्मॉग, सर. दैट्स योर आंसर. स्मॉग का आंसर वो है. या स्मॉग का आंसर ये है कि आप ऑल्टरनेट डे पे, पाकिस्तान में कल्चर नहीं है, बीचिंग में हो रहा है, ऑड एंड इवन गाड़ियाँ चल रही हैं, एक दिन बंद करते हैं, एक दिन ऑड चलाते हैं, एक दिन इवन चलाते हैं, साइकिलों पे आ जाते हैं सारे. So everybody comes on bikes. Are we prepared for that as a nation? No. I don't think we can imagine it, but it won't happen. हो नहीं सकता. ये evaporation water जो है, this will address the smog of the atmosphere also all over Lahore. है तो लाहौर ही नहीं जी, लाहौर को ही एड्रेस करेगा. इसके ये एक इसके मेजर 2 ये टेक्निकल ये इसके इश्यूज हैं, बेनिफिट्स हैं जो कि आने हैं इसके. अदर देन दैट, अब आ जाएं आप इसकी बाकी डेवलपमेंट के ऊपर. वी हैव अ मास्टर प्लान विच वाज अ 2015 मास्टर प्लान. वेरी लिटिल चेंजेस हैव हैपेंड ओवर द पीरियड कि जी वहाँ से वो सियालकोट मोटरवे कुछ निकल गई है या कुछ और हो गया है. बहरहाल एरिया तो वही है. वन ऑप्शन वाज स्टार्ट स्पेंडिंग एंड वेस्टिंग मोर मनी, और एक्सेप्ट दैट अ जॉब डन बाय अ कंसल्टेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम is a good job done. And there is always a room of improvement and changes as you go along, and you can always keep on adding those changes. But there had to be a starting point. So the starting point was we locked on that. We said a lot of money has been spent, we went through it, we
showed it to a lot of people because obviously उसमें भी word experts involved थे, word renowned planners भी थे, architects भी थे, water experts भी थे, so they had made that feasibility. So then I thought there's no point in opening this Pandora and going in for another consultancy, wasting another billion rupee. एक और आप 400 उस वक्त अगर 210 million 220 million had already been spent in 2015 on that. So there was no point in spending another 300 million and start a new feasibility. So we have locked that. And of course there is a room for improvement and changes which will over the period of time as we move forward, evolving process है. उसमें हम experts को अपने साथ hire कर रहे हैं जो हमें साथ साथ बताएंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या requirements हैं हमारी in terms of infrastructure. Like the city itself won't have the dirt roads like you have unfortunately in Lahore. Otherwise तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना बनाने का, वक्त ज़ाया करेंगे आप. उसमें फिर जब तक आप प्रॉपर मेट्रो नहीं बनाते हो, जब तक आप प्रॉपर अंडरग्राउंड सर्विसेज नहीं डालते हो, जब तक आप साइकिल लेन्स नहीं बनाते हो, ट्री एवेन्यूज़ नहीं बनाते हो, ग्रीन एरिया आप उसका कवर नहीं बढ़ाते हो तो फ़ायदा क्या होएगा. 6 मिलियन तो खाली शादरा फॉरेस्ट के अंदर आपके पास जगह है, 800 एकड़ आपके पास और खाली पड़ी हुई है जिसमें आप प्लांटेशन करो तो ओवर 7.5 मिलियन तो आपके दरख्त लग सकते हैं स्ट्रेट अवे. Now that is a strategic area, by the way, not just a forest. Don't forget, that's a strategic forest. You cannot have anything, you can't live there, you can't do anything. वहाँ पे आप एक झोंपड़ी भी नहीं बना सकते उस फॉरेस्ट के अंदर. उसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उस फॉरेस्ट का, ठीक है. बट फॉर द सिटी एंड फॉर लाहौर उसकी इंपॉर्टेंस है कि ग्रीनरी, ग्रीन कवर है उसका, तो वो ग्रीन कवर देगा आपको, ठीक है जी. वो आप ऐड कर रहे हो. एक आप पूरा 46 किलोमीटर का जो लाहौर का एंड टू एंड है जो कि 20, 30, 25 किलोमीटर में होएगा टू मोटरवे ब्रिज फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, वो आपका दोनों साइड्स पे प्रोमेनेड बनेगा. उस प्रोमेनेड के ऊपर आई कैन बेट मे बी मोस्ट ऑफ यू आफ्टर 10 years or within 10 years would be booking an apartment in that one of the building on the promenade, in front of the water and in front of the old city. The old city will be linked with the new city either through an overhang connecting it directly with the fort or a TBM bore underground deep below, go down and into the old walled city. That's the connection of the both that will happen. Baradari and Jahangir ka tomb, it's not in that shape, but they don't exist. और 3-4 साल छोड़ दे वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो है वो भी फारग, उससे भी फारग हो जाएंगे आप. हिस्ट्री को आप दफन करते जाएं. अंग्रेज़ अपनी हिस्ट्री को बचाता है, वो एक खिड़की को हाथ नहीं लगाने देता हेरिटेज बिल्डिंग को. और एक लैम्प पोस्ट भी लगता है सेंट जेम्स पार्क के अंदर, तो उसके नीचे आप पढ़ लें, उसके ऊपर लिखा होगा कि किसने ये इसका बल्ब दिया था. एंड दोज हु हैव सीन इट विल वाउच मी आउट कि ये हर लैम्प पोस्ट के नीचे उसका मार्किंग पे लिखा हुआ है कि दिस वाज डोनेटेड बाय मिस्टर फलाना, इजिप्शियन फलाना, ईयर फलाना, पूरा उसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है. हमने तो हिस्ट्री को बर्बाद किया, हम तो तोड़ते चले जा रहे हैं. ख़त्म कर दो. नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट इवन नो दैट व्हाट वाज पाकिस्तान था क्या, ये तो किसी को पता ही नहीं रहना. वो बारादरी एंड जहांगीर का मकबरा आर that's my passion, personal. Let's put it that way. We have already, made arrangements with Aga Khan Foundation Fund, for the restoration, who have done your wall city also, and with the Wall City Authority. And we have started documenting it. We have already documented quite a bit on Baradari, that what was its original form, इसके gardens क्या थे, इसकी format क्या थी, इसकी शक्ल क्या थी, क्या यूज़ हुआ था. हम उसको रिस्टोर करने लगे बिकॉज वो प्रोमिनेंट को टच करेगा, रिवर लाइन को टच करेगा, रिवर पानी होएगा, प्रोमिनेंट होएगा, और ऊपर ये बारादरी और आपका वो मकबरा खड़ा होगा. ठीक है जी. अब दाएं बाएं डेवलपमेंट्स हैं. डेवलपमेंट्स अब तो ये तो एक ओवरऑल एंड अदर देन दैट देन द होल सिटी मास्टर प्लान, इफ़ यू लुक एट इट शॉर्टली, आई एम क्लोजिंग इन ऑन अ वेबसाइट. और उस वेबसाइट पे मैं ये इंटरेक्टिव इन्फॉर्मेशन डालने लगा हूँ ताकि आपको मुझसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं रहा, मैं भी ना जाऊँ किसी के पास. आप मैप खोलिए, पंच कीजिए उसको, ओपन अप एंड सी व्हाट इट इज़. आपके सामने इको जोन भी खुलेगा,
नॉलेज सिटी खुलेगा, आपके सामने स्पोर्ट्स सिटी खुलेगा, गवर्नमेंट सिटी, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, एवरीथिंग विल ओपन अप। ओपन इट अप, देख लेते हो, खुद ही देखते जाए। तो वर्चुअल उसका क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है जी। इन आवर ऑफिस वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ वर्चुअल स्टूडियो so that anybody can come in there, and if he wants to see anything he can walk into the city there practically, ठीक है जी। अब कंसर्न्स पे आ जाए, तो ये तो एक बेसिकली चीज़ है जो कि मास्टर प्लान भी है, 3Ds भी हैं। यू मस्ट हैव सीन द वीडियोस, यू मस्ट हैव सीन शॉर्ट वीडियोस, सो यू हैव एन फील व्हाट इट इज़ कि है क्या, ये तो सबको पता है कि क्या चीज़ बनने जा रही। उसकी फर्दर डिटेलिंग भी शॉर्टली आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, सो यू विल बी मोर नॉलेजेबल ऑन एवरीथिंग, ठीक है। आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर यू गाइस एज फार एज द बिजनेस कम्युनिटी इज कंसर्न्ड। I've come in on a 24-hour notice. Thank you, sir. They called me yesterday and I'm here today. ठीक है। We have very little protocols, very little protocols. मगर एक ज़रूरत ज़रूर है कि अब टाइम ना मिले, there are too many things to do, too much to do. हायरिंग भी हो रही है, इंजीनियरिंग भी हो रही है, साथ साथ फाइनेंशियल मॉडल्स भी डिस्कस हो रहे हैं, there are so many things happening. अब कंसर्न्स पे आ जाइए जी। सेक्शन 4 लगाया गया था, ठीक है। सेक्शन 4 का मतलब सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि एक्विजिशन पे तो नहीं जाता वो, तो उसके तो 11 स्टेप्स हैं, वो तो राइट डाउन टू 11 जाता है। 4 गिव्स यू एन ऑप्शन ओनली टू वॉक इनटू द एरिया एंड डू अ सर्वे। बैक ऑफ द माइंड व्हाट वाज इट? कलेक्ट डेटा and get a feel of what it is. Who's who, who's where, how much, what is their value, what is like the level of the people who are there, illegal, legal or whatever. हो गया. Obviously people went in survey. I cannot discount the fact disinformation होती है, पटवारी सर्कल आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो मिसइन्फॉर्मेशन लोकल में और कुछ लोकल एलिमेंट्स भी खड़े हो जाते हैं जस्ट टू मेक इट पोलिटिसाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो कि हकीकत नहीं होती है। I went on Kamran Khan show specifically 2 weeks back. I don't know how many heard me on that. And this was the exact question he posed me. कि what will happen to these houses? What will happen to the industry there? And I was very clear and emphatic about it. And I am very clear and emphatic even today about it. ठीक है? None of the houses of an Abadi are going to be acquired. Bad call for them. They are not being bought. So it's a bad call for them. We are not buying anything. We are not acquiring them at all. Rather, they are being made and merged into the city itself. I may improve their, roads. I may improve their facades. I may paint them. I may give them social service. I give them municipal services. I'll give them better garbage bins. I'll put some better signage for them. I may request a shopkeeper कि यार बेहतर कर लो दुकान को, हम आपको बेहतर कर देते, merge कर लो इसको. So it's just like that you are sitting in a place and around you दुबई क्रिएट हो जाए, और जो कि हुआ था दुबई में कि डेरा में छोटे छोटे मकान थे, केएल में छोटे छोटे कंपाउंड थे, और बाद में वो $1 billion प्रॉपर्टीज़ बन गई, वहाँ बिल्डिंग्स बनी. These guys are going to be there. Nobody is displacing them at all. None. एक साहब इंटरव्यू में ये भी कह रहे थे हमारे जी कब्रिस्तान है 100 साल पुराने बाओ अजदाद के, क्या होगा? और भाई कब्रिस्तान तो वैसे ही एक्वायर नहीं होते, वो तो वैसे भी एक्वायर नहीं होते. फोर्स्ट में जाओ, फोर्स्ट एक्विजिशन में वैसे ही कब्रिस्तान एक्वायर नहीं होता, ठीक है. सो ये तो एक this is off our mind and absolute clarity in it, and we have said it, we are saying it again and again that none of the houses of anybody living there in that area is being displaced or we are acquiring it. Those were sitting on the in the flood zone itself, and they're in danger. You need to think about them because they get killed ultimately. फ्लड आएगा, पानी आएगा, तो ये मर गए तो ये भी तो आप ही के गले आएंगे ना कल को. तो उनको कुछ तो करोगे ना आप, उनको बेहतर एरिया उनको प्रोवाइड कर दोगे, उनको वहाँ से हटा दोगे, उन्हें कहोगे यहाँ बैठ जाओ, तुम लोग इधर चले जाओ. सो यू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम, नॉट दैट यू जस्ट थ्रो देम आउट. आई थिंक दैट विल बी क्रूअल एंड दैट विल नॉट हैपन. भैंसों वाले बैठे हुए हैं, छोटे छोटे भैंसों वाले बैठे, उनको भी तो कहीं जाना है. यू कैंट जस्ट थ्रो दैट भैंस वाला के उठो यार जाओ तुम यहाँ से निकलो. उसके लिए ऑल्टरनेट डेयरी फार्म्स का पूरा एक जोन एरिया के अंदर मार्क्ड है. उसके अंदर
कि पूरे का पूरा डेयरी और ये एग्रीकल्चर जोन है उसके अंदर। उस एग्रीकल्चर जोन में अगर यहाँ पे वो 4 भैंसें लेके एक छोटे से कमरे में बैठा है, उसको आप वहाँ बेहतर डेयरी फार्मिंग में ले जाओ उस जोन के अंदर, उसकी तो इनकम भी बढ़ेगी, बेहतर हालत में चला जाएगा, उसके लिए तो आप बेहतर रीलोकेट कर रहे हो ना उसको, बट यू नॉट थ्रोइंग हिम अवे। इंडस्ट्री पे आ जाए आप, हैं जी इंडस्ट्री, बिल्कुल है, 100 बिस्मिल्लाह बैठे, nobody is touching you guys, none. I clearly emphatically saying that nobody is going to touch that industry. I don't want to go into the legalities. जिनकी है उनको पता होगा कि उनकी क्या लीगैलिटीज़ हैं, उन्होंने लीगल बनाई हैं, लीगैलिटी फॉलो की हुई है या नहीं की हुई, वो अलहदा कहानी है, वो एक अलहदा मसला है। आई एम श्योर यू विल बी विद मी that the legal is legal and illegal is illegal. There you will support me on that. But they will have to just follow the laws of the new city. It's not Lahore anymore. Bad call. लाहौर में जो तबाही हो गई सो हो गई, मगर वहाँ पे जो इंडस्ट्री मौजूद है वैसी की वैसे ही रहेगी. Nobody is being touched. Nobody is being acquired. But they will have to follow the environmental laws of the new city. Those environmental laws are definitely किताबों में शायद होंगे, लाहौर में भी शायद लिखे होंगे, कहीं और जगहों में भी किताबों में होंगे, मगर उसके लॉज इम्प्लीमेंट होंगे. वो लॉज इम्प्लीमेंट होंगे फेज़ वाइज और उनको फॉलो करना पड़ेगा. Nobody is asking them to leave. Simple. Nobody is asking them to leave. Third portion, so that's clear, sir. No industry, भले प्लास्टिक का कारखाना लगा के बैठा है, भले इलीगल बैठा है, भले लीगल बैठा है, उसकी अलग कहानी है, मगर उसको हम नहीं भाई एक्वायर कर रहे और ना हम उसको कुछ कह रहे हैं. हम उसे सिंपली ये कहेंगे डाउन द रोड कि ये हमारे एनवायरमेंटल लॉज हैं इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, आप इसको फॉलो करो, ताकि वो जो गंद लाहौर का इस दरिया के साथ हुआ है गदर, वो वहाँ वो शहर ना करे कम अज़ कम. दैट न्यू रावी सिटी डजंट डू इट एटलीस्ट. वो एक एग्जाम्पल आप बना रहे हो फॉर द पीपल लिविंग हेयर और द ऑर्गेनाइजेशंस विद इन लाहौर इटसेल्फ. दैट इज़ योर सैम्पल लाइन कि आप एक क्राइटेरिया सेट कर रहे हो इनके लिए कि आप हमें फॉलो करो. हम नए आए हैं, हम नई चीज़ एक ला रहे हैं, आप हमें फॉलो करो बिकॉज ये बेहतर है. सो मे बी लाहौर का भी कुछ बेहतरी हो जाए उसमें. इंडस्ट्री इज़ अ ब्रेड है ना, बेसिक ब्रेड है ना, तो इंडस्ट्री को कौन करेगा. इफ़ एनीबडी इज़ गोइंग अराउंड एंड सेइंग इट, ओ जी हमसे वो निशान लगा गए, नोटिस आ गए, ना किसी को नोटिस गया है, नॉट टू माई नॉलेज. जाएगा तो सबसे पहले मेरे थ्रू जाएगा. ना किसी को एवैक्यूएशन नोटिस गया है, ना किसी को एविक्शन नोटिस गया है, ना किसी को कुछ और गया है. इफ़ इट विल गो थ्रू अस. नज़र आएगा ना, हमें भी हमसे गुजर के ही जाएगा ना, ऐसे तो नहीं चला जाएगा. हमने तो किसी को नोटिस नहीं दिया, हमने तो किसी को नहीं कहा जी आप उठाएं जी इंडस्ट्री यहाँ से ले जाएं आप. दिस इज़ जस्ट एब्सोल्युटली आप जिसे कहते हैं ना मिस इन्फॉर्मेशन कह लो. आई वोंट कॉल इट अ प्रोपेगेंडा वट एवर, बट ऑफ कोर्स देर ऑलवेज एलिमेंट्स के जो ब्लॉकेट डालते हैं आपके अंदर, जो आपके कोई काम अच्छा करने निकलो, ये शहर को छोड़ दें आप, इसको भूल जाएं एक मिनट. कोई भी अच्छा काम करने के निकलोगे ना तो देर इज़ ऑलवेज अ नेगेटिविटी ऑन टू इट. हम लोग स्टार्ट ही इससे करते हैं, ओ जी ये तो हो ही नहीं सकता. कोई काम किसी दौर में शुरू कर लो, पहला जवाब ही होगा ओ जी ये तो हो नहीं सकता है, पागल है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता. मगर फिर अगर करने चल पड़ोगे तो फिर शायद हो जाए. इफ़ यू आर मोटिवेटेड एंड यू आर डेडिकेटेड टू इट, इट विल हैपन. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. क्लैरिटी एब्सोल्युटली. कमिंग थर्ड टू द एग्रीकल्चर नाउ, दैट वाज तारिक's third question. एग्रीकल्चर एज अ टोटल ब्लडी जोन इनटू इट, फुल जोन. एग्रीकल्चर का इतना बड़ा जोन है उसके अंदर कि ये इनकी सोच है. उसके अंदर एग्री फार्म्स का पूरा एक पूरा जोन है एग्री फार्म्स का, ठीक है जी. मोस्ट ऑफ द एग्री फार्म्स तो मर्ज कर जाएंगी उसके अंदर, दे डोंट गो एनीवेयर. हमने अपना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो की थी वो हमने एक बंदे की ज़मीन में की, दरिया के किनारे, ठीक है. उसने भी एक छोटा सा वो ट्यूबवेल से लगाया हुआ है और वो वहाँ पे हमने पौधे भी लगाए थे, 200 दरख्त लगाया था हमने उस रात, ठीक है, जिसको डेली बेसिस पे पानी मिल रहा है. दैट इज़ डेवलपिंग इनटू अ फॉरेस्ट. वो अर्बन फॉरेस्ट हमने क्रिएट किया था फॉर द फंक्शन, और वो दरख्त वहीं के वहीं है आज की तारीख में. डेली बेसिस पे म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी जाती है और उनको पानी दे के आती है.
लाहौर में नहीं पानी मिल रहा, उनको मिल रहा है पानी, उन दरख्तों को, क्योंकि आई एम फॉलोइंग इट अप. आई आस्क देम एवरी डे एंड दिस हैव टू सेंड मी अ फोटोग्राफ ऑफ इट कि जी पानी दे रहे. और वहाँ पे उन दरख्तों को, वो 200 दरख्तों का जंगल बन रहा है, बन गया है बल्कि. द गाय हु सिटिंग देयर बाबा ये आज के किसी मुझे उठा के आप बाहर फेंकेंगे. मैंने कहा तुम्हें बाहर नहीं फेंकेंगे, तू तो बिलियनियर बन गया है, तू तो बिलियनियर बन गया रातों रात यहाँ पे बैठ के. तेरे तो यहाँ पे इर्द गिर्द जो है वो फार्म्स बन जाने हैं, पता नहीं तू किस जोन में आ रहा है. तो यू आर गोइंग नोवेयर, यू आर पार्ट ऑफ इट. तेरा क्या बेनिफिट होएगा, क्या कंपनसेशन तेरे साथ होएगी, तुझे क्या यहाँ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा. यू आर गोइंग टू स्टे हेयर, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. उसके थोड़े से फासले पे एक गांव है, वो उसके अंदर अब वो हिस्से में आ गया है. वो मेरा ख्याल है 100 के करीब घर हैं वहाँ पे. भाई कौन सा गांव है, अब दे आर पार्ट ऑफ इट, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर. तो उनकी तो बेटरमेंट हो गई ना जी, उनकी बेटरमेंट होगी. एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत ही तो ऐसी जब चीज़ बनती है तो उसमें एक सर्टन परसेंटेज तो डेफिनेटली होता है कि जो डिस्प्लेस होता है राइट लेफ्ट, मगर वो इस तरह डिस्प्लेस नहीं होता कि उसको बेनिफिट ना हो. A reasonable term benefit in terms of maybe he gets more plot or he gets an apartment or he gets another agri farmland और उसका पूरा एग्री जोन के अंदर उसको वो कहता है जी मुझे एग्री जोन के अंदर ये जगह दे दें मुझे वहाँ पे. आज अगर वो आलू नहीं जी आएगा लाहौर में, महंगा हो जाएगा. और खुदा का नाम मानो यार, आलू महंगा हो जाएगा. कहाँ से महंगा हो जाएगा? अगर आप इस प्रोड्यूस को 10 टाइम ज़्यादा प्रोड्यूस में ले जाओगे तो बढ़ेगा, ये कम होगा. फ्रूट आर्चर्ड्स आप लगा रहे हो और ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको तो नहीं आप छेड़ रहे हो, और इसकी ये प्रोडक्टिविटी और बढ़ा रहे हो आप एग्रीकल्चर लैंड की. सो दैट अगेन इज नॉन सिग्निफिकेंट ऑनेस्टली टू बी ट्रू. दे विल बेनिफिट आउट ऑफ इट. ठीक है. यस, एनवायरमेंटल इश्यूज थे, एनवायरमेंटल है. मैं तो तमाम एनवायरमेंटल को कहता हूँ मुझे स्मॉग का हल बता दो, फिर एनवायरनमेंट की बात कर लो. इफ आई कैन एड्रेस योर स्मॉग then you should be giving me an EIA and you shouldn't be talking to me like that. Then they have slowly understood it because they didn't go into the technical details. एक बड़ा होता है ना, एक knee jerk reaction होता है कि I have to oppose something. So in a knee jerk reaction you start opposing, but you do not understand the basic theme of the whole thing कि theme है क्या ना. यहाँ पे माशाल्लाह सब लोग बैठे हुए हैं जो बिज़नेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं. आधे से ज़्यादा 99% जिमखाना के मेंबर भी बैठे हैं. तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इट बेटर कि ये होने क्या लगा है. और आई वुड एक्सपेक्ट दैट वील कीप अ वेरी क्लोज एसोसिएशन विद द बिज़नेस कम्युनिटी. हमारे इन्वेस्टर्स बिजनेसमैन आ रहे हैं, बाय द वे, फॉर योर इंफॉर्मेशन. दे आर नॉट द डेवलपर्स, they are part of the business groups who are willing to invest in the project. The large business houses of Lahore and of the country. एक तो है ना जी कि रियल स्टेट डेवलपर्स हुआ, कुछ हुआ, वो इंटरेस्टेड होते हैं जी, कर लें, इन्वेस्ट कर लें, ये कर लें. इस दफ़ा एक चेंज है. वो चेंज ये है कि ये तो बिजनेस ग्रुप्स है जो फिर रहे हैं. दे आर ऑल वेरी कीन. उनका हमने एक वर्किंग ग्रुप बना हुआ है बिजनेस ग्रुप्स का, एंड दे आर ऑल कीन टू इन्वेस्ट. एंड वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ this can happen and how they can invest and in what form they can invest, क्या format बनेगा. तो we're still working on that. ठीक है जी. But the good part is they are not developers, they are making air conditioners or they are making jeans or they are making the US apparel, people like that. They are the investors who are willing to, who are coming in to invest into this whole thing. And so it's तो प्राइमरीली तो ये दरिया का प्रोजेक्ट है जी. आई एम अवेलेबल टू यू ऑल द टाइम वेन एवर यू गाइज वॉन्ट. लेट अस सेटल फ्यू मीडिया रूम्स एंड ऑल दैट इन आवर ऑफिस. वील कॉल यू गाइज ओवर देयर. हम आपको वहाँ बुलाएंगे, आप आइए हमारे पास. ठीक है. और वील कीप अ वेरी क्लोज. आई एक्सपेक्ट योर कोऑपरेशन. I will expect that you guys support me and help me out in save this thing which I've explained, which is the heart. Lahore बड़े crisis में जाने वाला है अगले 5 साल में. Whether whichever government remains, जो भी हो या जो कुछ भी, forget that part. वो हमारा फोटे नहीं है. But
as a pure on the pure engineering part, on the pure environmentalist part, on the pure एक आप उसको शहर को अगर आप देखते हो लाहौर को ना, you are hitting for a disaster. And this thing is going to save you. This river is going to save you. Not the zone or the real estate or the couple of buildings right and left are going to save this. The prime core of the thing is the river itself. If the river gets generated and the whole water line recharge होती है और environment clean होती है, तो I think you have done it. That's what it is. Now, the issue is, it is still, part of the master plan. Different agricultural lands are at different locations. Few have got larger chunks, few have got smaller chunks. Now, based on a detailed master planning of the whole thing, the choice will be open. The guy can stay there if he's already part of the agri zone. When the survey was done and when the whole master planning was done, people knew exactly where the agricultural land is. So they planned the agricultural land in such a way that they retained a lot of agricultural land into an agri zone. And they went into a wastelands where they planned, the buildings and the city and all that. Now, if somebody's agricultural land is really falling into a, one of the highways or something like that, then a portion of it is cut and sliced and rest is maybe in the agriculture zone, then that guy can probably go into the agriculture zone in lieu of that. Or, there can be different modes. I think it's going to be a case-to-case basis. Okay. To be Can he honest. be like an investor in the project if he gives the land to the project? And You the can. value of the project. can Yes, be yes, it will invested? happen because there are different models, Tariq, which are being discussed at this point in time. How do people become stakeholders? Somebody's got a large piece of land, somebody's got an agriculture land. He wants to be an equity holder, he wants to be a stakeholder into it. So that whole combination can come in. That's one idea for sure when the numbers are being made and different models are being created. So that is, of course, there an option that somebody has got like maybe 1,000 acres of land for that matter. Misal hai. I do this, so that's why I was asking. I know you have it. So if there is a big chunk of land and the guy says, I have 1,000 acres of land here and I want to be an equity holder into the whole thing, well, is a doable option. And his land can be adjusted in such a way that certain thing is coming maybe in some infrastructure or in some, or maybe he's lucky, half of it is coming into a commercial high-rise area and half of it is coming into an agriculture, and that agriculture can be, alternately he can go into the agri zone and he can get a replacement land and he can be relocated. He can, in lieu of that, he can get land over there. So this can be, because when you evolve a city, you cannot take decisions on day one, what really happens. So it's like just sit cool on it, and as things evolve, a lot of good options will evolve. Thank you, sir. That's the basic Many theme things have of been it. cleared up. Yeah. काफी लोगों के मेरी गुजारिश ये है कि आपके पास कोई ऐसा आता है बंदा फैक्ट्री में और वो आके कहता है कि जनाब यहाँ तो निशान लगा रहा हूँ और जनाब आप जा रहे हो और ये हो रहा फलाना फारग कर देगा, खाली करो, ये करो, वो करो. Please note his name and number. My contact number will be there of my staff officer and we'll appoint जी नदीम साहब बैठे हैं. He is mashallah secretary, sitting secretary to the government of Punjab also. He is secretary human rights. And he is also our chief operating officer on deputation with us. Usman is my staff officer. He is an assistant commissioner, hazard service, and he is from the of their factory guys. If somebody goes to them and gives them this wrong message कि ये हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया, जो भाई कह रहा है बात, उसका नंबर लें, वो नोट करें, हमारे नंबर पे फ़ोन करें, आप SMBR को फ़ोन करें, उस बंदे की या नौकरी फारग करें या उसको दाखिल दफ्तर करें. End of the story. Thank you. Simple. Because we have no instructions, absolutely no instructions for anybody going there or saying it कि जी हम एक्वायर कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं. हाँ, सर्वे की हद तक था कि जी बंदा कौन है, फैक्ट्री किस नेचर की है, क्या नहीं है, वो अपनी जगह रह गई बात. अब हमने तो भाई ना एक्वायर करनी है, हमने तो अपने डेटाबेस के लिए यूज़ कर लिया उसको, ठीक है, and we are going to build a database. But if anybody comes with such kind of messages, please take his name and number and inform our name and number which Nadeem Saab will place with you guys. वो नंबर आप अपने पास रखें, give it to your industrials or all the people and tell them कि अगर को आता है भाई इस नंबर पे कॉल करें.
इस नंबर पे कॉल करें. वी विल टेक दैट एंड वी विल कीप यू इन लूप एंड वी विल टेल यू कि हमने क्या हासिल किया उसका. प्लीज़. और मैं इस्लामाबाद चेंबर का हूँ भाई, आप लाहौर चेंबर के हो, तो उस नाते से मेरा हक ज़्यादा बनता है. फॉरगेट अबाउट दैट आई एम चेयरमैन रूडा और वट एवर. आई रिप्रेजेंट इस्लामाबाद चेंबर इन टू योर सिटी. नहीं तो मैं अपने चेंबर सारा आपके पीछे लगा दूंगा. ये आप याद रखें. बस ये रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी कमेटी इनिशिएट कर ले हम हम डिपार्टमेंट over the period of time in as things are settling down, I'm still hiring my people, I'm putting my PR people, other people in place. काफ़ी फास्ट ट्रैक में प्लेस करता जा रहा हूँ. एक डेफिनेट कमेटी बना लेंगे जिसमें कि चेंबर के लोगों को डाल लेंगे, हमारे लोग होंगे, आपके लोग होंगे, ताकि ये अगर कोई इश्यूज़ हैं या कोई कन्फ्यूजन्स हैं या कोई ऐसे कोई फिर रहा है या कोई गलत बयानी हो रही है कोई इस तरह का, तो वो आपस में कोऑर्डिनेटेड रहेगी और उसमें फिर कोई रादर वील बी सीकिंग योर हेल्प ऑल द टाइम. हम तो आपकी हेल्प मांग रहे होंगे ना हर वक्त कि जी हमारे सेमिनार में आ जाएं. हम सेमिनार कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. कपल ऑफ यू मे बी माई इन्वेस्टर्स डाउन द रोड. आप लोग चेंबर के अमीर लोग बैठे हो भाई, तो आप लोग तो इन्वेस्टर्स भी बन सकते हो. यू आर माई इन्वेस्टर्स. So, I think there is a lot of good synergy which can happen with the chamber. And I'm available to you guys all the time. I may not be picking up phones personally at times because of, stuck with a lot of work, 18 hours, 19 hours तो कर रहा हूँ काम, 4-5 घंटे सो रहा हूँ. तो उसमें इस्लामाबाद लाहौर की भी भाग दौड़ है. हर हफ्ते की एक मीटिंग है. We have had 39 meetings on this project from August till this point, till today. आज भी हुई है. Every Thursday there is a meeting. Every Thursday, non-stop. और भले कुछ हो जाए वो एजेंडा पे फिक्स्ड है. उसमें इश्यूज आते हैं जो साथ साथ डिसाइड होते हैं मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है. सो बट माई कॉन्टैक्ट नंबर्स आर देयर विद योर सेक्रेटरी जनरल. नाउ ही इज़ कनेक्टेड टू माई स्टाफ ओवर देयर. विल टेक ऑल द मैसेजेस, विल रिस्पॉन्ड और कमेटी बना देंगे. वो आसानी हो जाएगी कि उसमें अपने लोग हम डाल देंगे, आपके लोग भी हो जाएंगे. दे कैन कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. मुझे और तारे को टाइम नहीं भी है अगर, तो इट डजंट मैटर, दे विल कीप ऑन वर्किंग. ठीक है ना. So I'll beg leave. I have another guy sitting there now at 4:30. रहमान, आपका क्वेश्चन है कोई इंडस्ट्री कोई और क्वेश्चन है जी? हमने जी अभी एक्विजिशन स्टार्ट ही नहीं की, तो हमने फंड्स क्या प्लेस करने हैं. हम तो अभी सर्वे करके बैठ गए. अब हमने एक्विजिशन क्या करनी है, तो सरप्राइज़ है सबके लिए कि हमने क्या एक्विजिशन करना है और क्या नहीं करना है. उसके तो हम फेजेस बना रहे हैं. हाउ वी आर गोइंग टू एक्वायर द थिंग, व्हाट पोर्शन. हम प्राइमरीली पहले तो रिवर वर्क्स को हमने चैनल का काम करना है. तो रिवर वर्क्स और चैनल्स के अंदर जो है उसके लिए हम एक्विजिशन करेंगे. और ऑब्वियसली वील गो बाय द लॉ एंड बाय द बुक कि उसके लिए फंड्स प्लेस करेंगे तो आगे चलेंगे ना जी. तो वो हमने अभी तक ये डिटर्मिन नहीं किया कि हमने कौन सा एरिया, क्योंकि हम चैनल वर्क स्टार्ट करने लगे. रिवर वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अस देन एनीथिंग बियॉन्ड दैट. तो उसके लिए हम अब एग्जैक्ट सर्वेस कर रहे हैं और डिटर्मिन कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली कितनी उसमें लैंड फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 2 में चाहिए. फिर उसको अकॉर्डिंगली हम उतने ही फंडिंग आगे प्लेस करके फिर आगे बढ़ें. जी सर. जी सर. एक्जीक्यूशन प्लान. देन वी विल स्टार्ट टेकिंग ऑफ सेक्शन 4 एंड वी ऑल्सो स्टार्ट, देन वी विल ऑल्सो इशू. फिर पॉलिसी देंगे ना जी, पॉलिसी देंगे ना, देंगे पॉलिसी. इसको रिटर्न में भी देंगे, इसको पॉलिसी को देंगे और हर बंदे को लिखेंगे, हर बंदे को लिखेंगे बोल्ड पॉलिसी और देंगे उसमें लिखेंगे कि तुम लोगों के ऊपर ये लॉज अप्लाई करेंगे और तुम लोग बिल्कुल रहोगे. देंगे कुछ अरसे बाद देंगे. आज ना लीजिए आप यार प्लीज. आपको एक्सक्यूज मी, ट्रेड के थ्रू जाएंगे, मेरे और दोस्त भी बैठे हैं. मेरे साहब बस 1 मिनट सर, लास्ट क्वेश्चन. सर मेरे साहब, आप एक नई सिटी प्लान कर रहे हैं, उसके लिए आपने लैंड भी एक्वायर करनी है जी. और लोगों को लॉ भी करना है. जी जी. आपने भी बताया कि जो इंडस्ट्री है आप उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा है. नहीं छेड़ा. 40-50 साल पहले ये गड्ढू हुआ था, फिरोजपुर और बागा इस साइड जो इंडस्ट्री लगी तो उस वक्त ये जहाँ पे है वहाँ कैप हो जाएगी मेरे साहब. जहाँ आज के दिन है वहाँ कैप हो जाएगी. प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहे हैं. आपके इल्म में होगा कि कमर्शलाइजेशन के लिए सदर साहब को पता है, उसके लिए हम लाहौर चैम्बर कितनी एफर्ट कर रहा है कि उसके लिए प्रॉब्लम हो. वो जो करंट रेट है ना उसको वो कमर्शलाइजेशन फी मांग रहे हैं. तो ये ना हो कि वो जब ये इंडस्ट्री हाउसेज बन जाए, ये इंडस्ट्री हाउसेज के अंदर आ जाए तो वो नहीं, वहाँ हाउसेस तो है ही नहीं. वहाँ जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ हाउसेस नहीं है.
ऐसा ऐसा को हाउसिंग कॉलोनी तो बनने नहीं लगी मेरे साहब, ये चीज़ ही कुछ और है। कमेटी बनाएंगे बना देंगे, उसमें एड्रेस हो जी जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट साहब सर आपका थैंक यू अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वाइस प्रेसिडेंट साहब एक मिनट सर, आपका बस थैंक यू। आई नो आपने मीट थी रिजर्वेशन थी हमारे बिजनेस कम्युनिटी की, वो आपने क्लियर कर दी। सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू। So kind of you. I'm really glad to meet all of you. Khuda Hafiz. सर। थैंक यू।